Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn about the Contract Act 1872 definition and introduction. Today we will start the Contract Act. In previous lecture we have learned about the classification and sources of law, and we have discussed in detail the different classification and sources of law, like imperative law, physical or scientific law, natural or moral law, conventional law, customary law, practical and technical law, international law, and civil law. And we have discussed every source of law in detail with examples, and I think so, I hope so that you have learned something new, and you understand each and every source and classification of law. And then at the end of the lecture we have discussed about the sources of law. The sources of law are different sources of law we have discussed. At the end of the lecture we have discussed about the sources of law as the formal sources of law, the legal sources of law, and material and the historical sources of law. The formal or legal sources of law, like legislation, precedents, customs, and agreement. So legislation means the parliament legislate, the parliamentarian legislate in our country, that we have the parliamentary form of the government, and we have two houses like parliament and senate. The senators and the parliamentarian legislate and make the laws, and the president, the court's decision, the judicial decision of the courts, and the customs. We have discussed in detail the customs, the traditions of the people, long-term traditions that are binding as the source of law. That is also this is also considered in Islamic law, custom as the source of law, and the agreement between two parties. So, and the material and the historical sources. Of material sources are comprised of legal sources, and historical sources, legal sources, are comprised of the following: legislation, precedent, custom, agreement. The main instrument under the legal sources is legislation and precedent. So these are also the sources of the historical sources, and the material sources, these are also called. So, and in Islamic source of law, we have two types of laws, source of laws. The primary source of law, that is the Quran and Sunnah, that is permanent unchangeable laws, and the rest are the ijtihad, that is divided into ijma, qiyas, like custom, ihsan, istihsan. So different source of laws. So these are the not fixed laws. These need to be changed with the need of the time. So these are called the fiqh, and fiqh mean understanding, and understanding is varies from one person to another person. So these are the some different source of law. So today we are going to discuss about the Contract Act definition and introduction. So let's start here. In this lecture, learning objectives: after studying this unit, you would be able to understand the meaning of the terms agreement and contract, and note the distinction between the two. Note the essential elements of a contract. Be clear about various types of contract. Understand the concept of offer and acceptance, and rules of communication and revocation thereof. So these are actually basically related to the agreement between the parties. So contract is an agreement, so agreement is a contract. So this will bind ensure your rights and duties, and these are the binding under the law. So there is the concept of understand the concept of offer and acceptance. This is the basic unit of the contract.
Any commercial activity requires understanding among people concerned. This understanding is often reduced into writing to give effect to the intention of the parties. So, contract act basically related to between two parties, and where there is understanding, there will be a contract, there will be understanding, there will be a partnership business. So this is related to the business activities and between the parties, one parties, two parties, three parties, more parties, partnership company. So this is related to the business activities. Such formal versions are known as contracts. These contracts define the rights and obligations of various parties to facilitate easy performance of the contractual obligation. So this the contract means that is the bindings that will bind you, that will legally protect you. The Indian Contract Act 1872 codifies the legal principles that govern such contracts. Why we call this Indian Contract Act? Because it was when it was started, we were in India, we were the part of India. So this is, as I have already told you about that, the all the judicial system and the different sources of law and different kinds of law, we have follow the British law. So British ruled here in subcontinent, and that's why we are follow these laws. The act basically identifies the ingredients of a legal enforceable valid contract, in addition to dealing with certain special type of contractual relationship like indemnity, guarantee, bailment, pledge, quasi contracts, contingent contracts, etc. Introduction. So first of all, before going to start the contract act, what is business actually? And because this is related to, purely related to the business, any profitable activity such as trade, commerce and industry is called business. A business is defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. The term business also refers to the organized efforts and activities of individual to produce and sell goods and service for profit. If we sum up this definition, we say that this the business contains three main pillars, three main ingredients. Number one, input. Number two, services. Input mean your income, your money, your you can say वो जो आप माल उसके अंदर जो है ना वो लगा रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर इनपुट. एंड सर्विसेज इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग लाइक योर आप ये कह लें कि जी उसके अंदर आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, सर्विसेज के अंदर आपकी एफर्ट्स भी शामिल हो जाती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके अंदर जो है ना वो शामिल हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी भी उसके अंदर जो है ना वो शामिल हो जाती है, उसके अंदर जो है ना वो आपकी लेबर भी शामिल हो जाती है. इंक्लूड योर लेबर, योर इंफ्रास्ट्रक्चर, योर बिल्डिंग मटीरियल, योर फैक्ट्री, योर वेयर हाउस, your shop, your project, everything includes services. And this and the output include your profit. The output include your market as well. The output include your product which you are going to manufacture as well. The output include your customer as well. And you can say the market, and the output means simply you can say your profit that you will earn after your input and your services. So these are the three main ingredients in your business. So keep it in your mind when you are going to define the business. This is the related to the trade, commerce and industry. And the profitable an organization, enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. The term business also refers to the organized efforts and activities of individual to produce and sell goods and services for profit. Law.
Rules and principles made by a competent authority for proper regulation of a community we have already defined, we have already discussed in detail. Business law is the branch of law which comprise laws concerning trade, industry and commerce related to business, simple. And the Contract Act 1872 law governing the Contract Act in Pakistan is contained in the Contract Act 1872, passed in 1871 and came into force in 1st September 1872, based mainly on English common law, which is to a large extent made up of judicial precedents. The scheme of act may be divided into two main groups: a general principle of law of contract, section 1 to 75 deal with the general principles of the law of the contract, and number two, the specific kinds of contract. So specific kinds of contract includes the Sales of Goods Act, section 76 to 123, repealed, indemnity and guarantee, section 124 to 147, bailment and pledge, section 148 to 181, and agency, section 182 to 238, and partnership, section 239 to 266. So these are related to the all these different terminologies related to the business, like Sales of Goods Act, indemnity and guarantee, bailment and pledge, agency, partnership. So these are the familiar terms. You also know with these terms. So this is the Contract Act, the scheme of the Contract Act, and inshallah we will discuss one by one. So what is a contract? Section 2 subsection H of Contract Act defines an agreement enforceable by law is contract. So an agreement enforceable by law is a contract. Explanation: a contract is an agreement the object of which is to create a legal obligation, that is a duty enforceable by law. Simple. So if somebody do an agreement between two parties going to be agree on an agreement, but if it is not bound by law, that would not considered as the contract. This is called a simple agreement. But as it is under the Contract Act, if it is defined under the Contract Act, and if it is protected by the Contract Act 1872, then it would be considered as that agreement well considered as the contract, and it is the duty enforceable by law, and your rights and duties will be protected by law. What is agreement? Section 2 subsection E: every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. So this is also this definition include in the contract definition, because agreement is the part of contract. So simply every promise and every set of promise forming the consideration for specific consideration for each other is an agreement. Promise: when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes a promise. So आसान अल्फाज के अंदर जो है ना वो कि जी कोई भी बंदा किसी के साथ कोई वादा करता है, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई एग्री करता है और उसके बीच में कोई कंसिडरेशन होती है कि यार ये काम इस तरीके से करना है, तो वो उसको सिंपल एग्रीमेंट कहते हैं. अब प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस वो होता है कि जी जिसके लिए कोई बंदा कोई प्रपोज़ल पेश करे और फिर वो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे, तो व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस. जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो प्रॉमिस होता है. एंड सेक्शन 2 subsection defined under the Contract Act 1872. So simply this is we have defined here 3 definitions. Number 1 contract, number 2 agreement, and number 3 promise. So don't be confused, everything is very simple. Contract mean as an agreement enforceable by law, and agreement mean every promise and every set of promise forming for the consideration for each other. जब जहाँ पे कोई कंसिडरेशन के लिए कोई प्रॉमिस किया जाए
तो वो उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहा जाता है। और प्रॉमिस किसको कहा जाता है, प्रॉमिस व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट, जहाँ पे जो है ना वो आप प्रपोजल देते हैं और फिर अगला उसको जो है ना वो एक्सेप्ट करता है, व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है जी, प्रपोजल देन एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस, और एग्रीमेंट mean the promise and every set of promise forming for consideration for each other। ठीक है जी, उसको एग्रीमेंट कहेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे, जिसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। एवरी एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। A legal obligation, duty enforceable by law, an agreement incapable to create a duty enforceable by law is no contract at all। जिस एग्रीमेंट के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं कि जी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो सिंपल एग्रीमेंट होगा, उसको सिंपल प्रॉमिस बिटवीन टू पर्सन जो है ना वो कहेंगे। सही है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। डोंट बी कंफ्यूज, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बिकॉज एग्रीमेंट का मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट व्हेन एग्रीमेंट बी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट and enforceable by contract act, that it will become contract. When it will not be acceptable, will not be protected by the law, then it will not consider the contract. So contract, all contracts are agreements simply, but all agreements are not contract, because all agreements are not बाइंडिंग बाय लॉ, दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हम डेली रूटीन में बहुत से लोगों के साथ एग्रीमेंट्स जो है ना वो कर रहे होते हैं, हम प्रपोजल एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं, कंसिडरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जो है ना वो हमारा प्रॉमिस हो सकता है, हमारा एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन जब हम उसको अंडर दी जो है ना वो लॉ उसको जो है ना वो करेंगे तो दैट वुड बिकम द कॉन्ट्रैक्ट। कंक्लूजन, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट्स, नॉर इज इट the whole law of obligations, it is the law of those agreements which create obligations and those obligations which have their source in agreements, that is called simply contract. And this definition is by Solomon. So he is the very famous jurist, very famous law expert. So this is the definition of Solomon, that it is the law of those agreements which create obligation and those obligations which have their source in agreements, that is called contract. Simple. So don't be confused, everything is very simple, very clear. Essentials of a valid contract. A contract, according to the section 10, all agreements are contract if they are made by the free consent of parties competent to contract for lawful consideration with lawful object and are not hereby expressly declared to be void. Void mean you can say simply that is under the law not acceptable. So this is mean void. Where necessary, the agreement must satisfy the requirements of law regarding writing, attestation or registration. So उसकी कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं कि जी जो है ना वो एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कि जी जिसके अंदर जो है ना वो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो उनको जो है ना वो नंबर 1 कि जी जो है ना वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कि जी पार्टीज़ की जो कंसेंट हो वो फ्री होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन ना हो। ठीक है जी, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्ट हो वो लॉफुल हो, अनलॉफुल ना हो। और ना ही लॉ ने उसको जो है ना वो वॉइड या अनलॉफुल डिक्लेयर किया हुआ हो। और प्लस उसके साथ साथ जो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है ना वो जो उसको सेटिस्फाई करती हैं, जो उसको प्रोटेक्शन देती है, उसके अंदर ये होगा कि जी वो राइटिंग में होना चाहिए, अटेस्टेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर विटनेसेस होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी, देन योर कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम कंसिडर्ड एज दी valid contract and it is the binding by law and enforceable by law and your rights and duties will be protected by law simply. So number 1, offer and acceptance, one by one we will discuss here. For any agreement there must be a lawful offer,
by one party and lawful acceptance of that offer from other party. So the term lawful means that the offer and acceptance must satisfy the requirements of a contract. So what is ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कि जी आप जो है ना वो किसी को कोई ऐसी ऑफ़र ना करें कि जी जो मतलब ये कि जी अनलॉफुल हो, या मतलब ये कि जी उसको वो एक्सेप्ट ही ना कर सकता हो। मिसाल के तौर पे हम आप किसी को ऑफ़र करें कि यार जो है ना वो कि जी फ़लाँ बंदे को आप जाके जो है ना वो मार दो, और वो गए वो उसके बस में ही ना हो, वो उसको कैसे जो है ना वो एक्सेप्ट जो है ना वो करेगा। ठीक है जी, तो दैट इज़ मतलब ये कि जी इलीगल है, दैट इज़ अनलॉफुल है। सही है। या आप उसको बोलो कि यार फ़लाँ घर से जो है ना वो आप जो है ना वो चोरी करके आ जाओ, तो हम मैं आपको इतने जो है ना पैसे दे दूंगा। आप उसको जो है ना वो एक मतलब ये कि हमारे दरमियान में ये एग्रीमेंट है। सो दिस इज़ अनलॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफर बाय द पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस, और लॉफुली वो उसको जो है ना अगर एक्सेप्ट करता है तो दिस वुड कंसिडर्ड एज द अनलॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द टर्म लॉफुल मीन्स दैट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस must satisfy the requirements of the contract and must satisfy that is the legal obligation. The parties to an agreement must create a legal obligation. It means that if one party does not fulfill his part of promise, he shall be liable for breach of contract. So legal obligation mean when you are going to make a contract, then everyone is legally bound by law that he fulfill his part, or he fulfill the requirements or legal obligation on ईच वन ऑफ हिज पार्ट। सही है। इफ़ अगर एक पार्टी भी जो है ना वो नई प्रॉमिस को फुलफ़िल करती है तो दूसरी पार्टी के ऊपर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होगा, और फिर दूसरी पार्टी उसके ऊपर डैमेजेस भी क्लेम करेगी। दूसरी पार्टी उसको जो है ना वो क्या कहते हैं कि जी जो है ना वो उसको कोई लॉस होगा उसके लिए भी जो है ना वो सू करेगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो टूट जाएगा। जब वो टूटेगा तो फिर ज़ाहिर है जब आपने ऑलरेडी उसको लीगली बाउंड किया हुआ था तो फिर आपके ऊपर जो है ना वो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो आ जाती हैं। ठीक है, अब दूसरी पार्टीज़ के राइट तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं सिंपली। एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹200, बी एग्रीज टू बाय, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, ए ने कहा बी को कि जी ए offers B to I am selling you my car with 4 lakh 5 lakh rupees, and B agrees to buy it. It is a contract as it create a legal obligation. Simple. A husband promised to pay his wife an allowances of £30 every month. Later the party separated and the husband refuses to pay. The wife sued, held that wife was not entitled as agreement did not create legal obligation. So because this is a moral obligation. In upper example, there is a legal obligation between two parties when one party offer and other party is accepted, and the contract is executed between two parties and both parties mutually agreed, and finally they have decided and they buy and sell, handing and taking over everything. Then both the parties will be legally bound by the law. But as far as concerned, husband promised to pay his wife an allowance of £30 every month. This is a legal, this is a moral obligation. They are, this is not binding under the law. So later the party separated. जब वो बाद में अलहदा हो गया, हस्बैंड रिफ्यूज़ टू पे, उसने ज़ाहिर है जो है ना वो उसकी बीवी नहीं रही। पहले उसने कहा था कि जी मैं हर महीने तुम्हें जो है ना वो £30 का जो है ना वो ख़र्चा दूंगा। तो द वाइफ सूड, वाइफ ने उसके ऊपर कोई केस किया। द वाइफ वाज नॉट इंटाइटल एज एग्रीमेंट डिड नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, तो ये जो है ना वो केस हुआ था, ये केस लॉ है। दिस इज़ द एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अबाउट किसके मुतालिक है, लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के मुतालिक है। सही है। नंबर 1 लीगल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की पहली जो कंडीशन है वो लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, और ये उसकी जो है ना वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। लॉफुल कंसिडरेशन नंबर 3, एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल ओनली व्हेन पार्टीज गेट एंड गिव समथिंग, the something given or obtained is called consideration. Consideration must be lawful as well. For example, a promise to give him a government job and B promised to pay Rs 1 lakh, the agreement is void because consideration is unlawful. लेकिन कितनी
सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि जी जो है ना वो उसके अंदर जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है कि जी उसने कहा कि जी मैं आपको गवर्नमेंट जॉब दूंगा, आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे। तो यहाँ पर जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो कैसे कोई दे सकता है, और 1 लाख रुपए देगा तो इसका मतलब ये है कि जी उनके दरमियान में जो है ना वो ये ब्राइब का जो है ना वो एलिमेंट यहाँ पे जो है ना वो शामिल हो गया। सो दिस इज़ सिंपली द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। वॉइड उसको बोलते हैं दैट इज़ अनलॉफुल बाय, दैट इज़ इलीगल बाय लॉ। मतलब ये कि जी जिसको लॉ ने जो है ना वो इलीगल करार दे दिया हो, उसको जो है ना वो अनलॉफुल करार दे दिया हो, उसको वॉइड कहा जाता है। और बिकॉज कंसिडरेशन इज़ लॉफुल, सिंपल। नंबर 4, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। An agreement is enforceable only if it is made by parties who are competent to contract. To be competent, the party must be of the age of majority, of sound mind, and not disqualified from contracting by law. तो भाई यहाँ पर आपने 3 चीज़ें जो है ना वो पार्टीज़ की कॉम्पिटेंसी के लिए 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, the age of majority, the age of puberty, that is defined in law that everyone should be at the age of 18. He is can be entered into contract with legally, and so the age of majority considered normally is 18 year age. Number 2, sound mind, that he should be a sound mind, वो पागल ना हो, वो जो है ना वो क्या कहते हैं मेंटली अपसेट ना हो, और उस कोई ऐसी चीज़ ना हो, ठीक है जी। एंड नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाई लॉ, ना ही उसको लॉ ने किसी भी सूरत के अंदर डिसक्वालीफाई किया हो, क्योंकि जो है ना वो कुछ लोग जो है ना वो उनके ऊपर जो है ना वो कुछ मतलब ये कि जी वो गवर्नमेंट के जो है ना वो चीज़ें पे करनी ज़रूरी होती हैं, कहीं पे जो है ना वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए होते हैं, कहीं पर लॉ ने जो है ना वो उनको डिक्लेयर किया हुआ होता है कि यार इस बंदे के साथ आप कोई भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर लॉ ने किसी बंदे को जो है ना वो डिसाइड किया हुआ है, कोर्ट ने उसके मुताल्लिक डिसीजन दिया हुआ हो कि जी जो है ना वो इसके साथ किसी भी किस्म की लेन देन और वो कोई भी काम नहीं कर सकते, तो 3 चीज़ें जो है ना वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के अंदर, नंबर 1 एज, number 2 sound mind, and number 3 that is not disqualified from contracting by law. Example, M, a person of unsound mind agrees to sell his house to S for Rs 2 lakh. It is not a valid contract because M is not a competent to contract. ठीक है जी, वो अनसाउंड माइंड है, वो जो है ना वो मतलब ये कि जी जो है ना वो फुली साउंड माइंड नहीं है, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Free consent, the consent means that parties must agree upon the same things in same sense. For a valid contract, the consent of the parties must be free. ठीक है जी, according to section 14, consent is free when it is not obtained by coercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ठीक है जी, अब सेक्शन 14 जो है ना वो डिफाइन करती है, वो क्या क्या कहती है कि जी फ्री कॉन्सेंट का मतलब ये है कि जी कोरियन का मतलब ये होता है कि जी दबाव में नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो मिसाल के तौर पे लोग, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई बंदा अपनी पावर, कोई बंदा अपनी अथॉरिटी से मॉरली, लीगली, मतलब ये कि जी जो है ना वो इलाके का वडेरा या कोई भी बंदा जो है ना वो अनड्यू अपना इन्फ्लुएंस जमा के, या कोई कमिश्नर या कोई जो है ना डिप्टी कमिश्नर या कोई पुलिस वाला या कोई भी बंदा जो है ना वो, दैट इज़ कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड नंबर 3 फ्रॉड, मतलब ये कि जी आप उसको कोई और बात दिखाएं, और कोई फ्रॉड सिंपली मतलब ये कि जी जो फ्रॉडुलेंटली जो काम होते हैं। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन के जी आप उसके सामने जो है ना वो किसी भी चीज़ को जो है ना वो फुल गलत तरीके से जो है ना वो पेश किया जाए, और मिस्टेक या कोई भी लॉ जो है ना वो मिस्टेकनली जो है ना वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो ज़रूरी ये कि जी फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए कि जी हर बंदा अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी दबाव में आके कोई भी काम ना करे, कोई काम करे तो उसको जो है ना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा। इफ़ द कंसेंट ऑफ द either of the parties is not free, the agreement cannot become a contract। ठीक है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं होगा। एग्जाम्पल, ए कंपेल्स बी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट गन पॉइंट, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज द कंसेंट ऑफ बी इज़ नॉट फ्री। ठीक है जी, अब गन पॉइंट का मतलब ये है जी कि जी कोरियन हो गया, दबाव में आके वो बंदा ये काम कर रहा है, तो वो जो है ना वो लीगली जो है ना वो क्या कहते हैं कि जी जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सिंपल एवरीथिंग। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस की बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे यहाँ। लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि जी जो है वो
फ़ोन करा देते हैं जी, पुलिस वाले का जो है ना फ़ोन आ गया, बंदा जो है ना वो डर से अपनी ज़मीन को जो है ना उसको कहते हैं कि यार तुम बेचो ही बेचो, अगर नहीं बेचोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फ्रॉड कर देते हैं, ठीक है, या मिस प्रेजेंटेशन जो है ना वो करते हैं। तो ये कॉमन मतलब ये प्रैक्टिसेस are prevailed in our societies, and people do like these are actually not only unlawful by the contract law, but also unlawful morally, and also unlawful and haram and prohibited in uh, Islam as well. As you know, Islam says, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि जी ए ईमान वालो, कि जी किसी भी बातिल तरीके से जो है ना वो अपने जो है ना वो लोगों का माल ना खाओ। अब बातिल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बातिल के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, एवरी काइंड, लाइक सूद, लाइक इंटरेस्ट, लाइक फ्रॉडुलेंट, लाइक अनडू इन्फ्लुएंस, लाइक कॉरियन, लाइक फ्रॉड, लाइक मिसरिप्रेजेंटेशन, लाइक मिस्टेक, लाइक on gunpoint, or matlab whatever the thing. Batil mean everything that is unlawful morally, unlawful legally, unlawful by law, by Quran and Islam as well.